हेलो गाइस, दिस इज वर्तिका सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पाइथन में सीखेंगे कि एक 3 डिजिट का नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, वो हम कैसे पता लगाएंगे। सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? इफ द सम ऑफ इट्स ओन डिजिट raised to the power of number of digit gives the number itself, then the number is known as Armstrong number. Okay, for example, 153 153 अगर हम इसको 1 का पावर 3 करें, सॉरी 1 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 करें तो 153 ही आएगा। ओके, 1 का पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 का पावर 3 इज 125 एंड 3 का पावर 3 इज 27। ओके, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 153। सो इस टाइप के नंबर्स दे आर नोन एज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हम यही पता करेंगे कि एक यूजर जो नंबर देगा वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, हमें ये पता लगाना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक यूजर इनपुट लेंगे। यूजर इनपुट इज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर योर नंबर। अब हम नम वेरिएबल में यूजर इनपुट का वैल्यू डालते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें तीनों डिजिट्स पता लगाने हैं। सो हम सेम मेथड यूज करेंगे। a इज इक्वल टू नम मॉड 10, num now is equal to num integer division 10, b is equal to num mod 10 and c is equal to num integer division 10। ओके, और अब हम यहाँ पे लगाएंगे if स्टेटमेंट। if a to the power 3 plus b to the power 3 plus c to the power 3 is equal to user input, print num, print Armstrong num. Okay, else print not an Armstrong number. ओके, सब हम इसको रन करा के देखते हैं। एंटर योर नंबर 153, सो इट्स एन आर्मस्ट्रॉन्ग। 876 इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एक और चेक करते हैं। 370 is an Armstrong. Thank you guys for watching this video. Bye bye.